example, everybody calls me burger. And that's okay. If I am well spoken and that means that I'm going to be called a burger, I'm okay with that. I'm a burger. Actually, I'm the really nice double decker Big Mac burger. जनाब वेलकम टू द सीज़न 2 ऑफ जिरगा एपिसोड 1। मेरे स्कूल टाइम के अंदर दो ही सुल्तान मशहूर थे, एक सुल्तान मूवी और दूसरा अरम काशिफ सुल्तान। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, diplomas, principaling schools and all of that. Miss Arham, welcome. Assalamu alaikum, and thank you so much for having me. I'm hoping it's going to be a pleasure. Inshallah, Miss. Miss, give us a brief introduction about your portfolio or about your experiences. Okay, so let's start from my education. I am, as a degree holder, I have done my LLB, so I'm a lawyer. However, when my kids were born and I was choosing as to what school to put them in, I realized that education is not all that it's cut out to be in Pakistan. So I started working, and one thing led to another, and I started my own school. Back in 2012, I ran my own school. We were doing well, but then the laws were changing so fast in Islamabad that we had to sell it. So then I started another school with someone in the diplomatic enclave. It was called Rockville Schools and Daycare. I created it, and then I was introduced to the International Baccalaureate, as you know. And that's when I joined an organization that not only taught me a lot about the IB, but eventually I turned into one of the leading members of the IB family that they had in Pakistan. ठीक है, तो उससे पहले your life as a student, what are the degrees you pursued and the qualifications you had? So basically, I've done my O-levels and my A-levels. And like I said before, I've done my LLB from... It's an external degree from the University of London. However, I did study for it in Islamabad because I belong to a super conservative family that does not believe in sending their kids abroad. And now you're a lawyer? Girls abroad. And now you're a lawyer and a mother? And now I am a lawyer, I am an educationist, and definitely a mom, wife, daughter, everything that comes with being a girl in Pakistan. So how has your transition been? Was it comfortable, or were you in a sort of a culture shock from shifting from abroad diplomas or degrees or education systems to the ones in Pakistan? So, having studied in Pakistan my entire life, it was not as shocking. However, being a student, your priorities and perspectives are very different. And then when you become an educationist, a lot of things change, especially if you're someone who deeply ponders over and reflects over everything that is happening in the classroom, what is being taught, how it's being taught. So yes, when you feel that education should be a certain way in your gut, and it's being done in a completely different way in literally 99% of the schools in the country, then yes, it is quite a shock. So you're happy with your decision in staying in Pakistan? I am definitely happy with my decision of staying in Pakistan because of the fact that the only way we can make this place better is by having people who are well educated and well exposed and have that knowledge that they can share with people to make or try to make this place a little bit better for the coming generations. Then they should stay here. So every student has their own forte, and that forte should decide what they should do in the future, not the scorecard saying this program is really good or this program is really expensive, so it must be good. That is a very wrong way of thinking about education and how people should learn. Primarily, अगर आप पुराने ज़माने को देखें तो yes, FA and FSC were perfectly fine, and even in the 60s and the 40s, I mean, Quaid-e-Azam himself, before Pakistan was even created, he went for his LLB abroad also. तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो national level की education थी कि वो इस तरह की थी कि we could not go abroad. Primarily because of the fact that we were under the British Raj, and obviously they influenced the education system here a lot, and English was very widely spoken amongst the educated. So they were going abroad even at that time. The question was never whether or not A-levels can get you in or FA or FSC can get you in. The question was how well it can get you in.
right? So when our students are looking for scholarships, ये अभी की बात नहीं है. आई नो अगर हम इस वाली कॉन्वर्सेशन में करें पढ़ें कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है और डॉलर बढ़ गया है और पाउंड्स बढ़ गए एंड इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर scholarships, right? And thus they have to do a program that is preferred by those universities, and they understand it better. So obviously that is one of the main reasons that you are looking at international certifications to get into international universities, but it by no measure does it say that you cannot get into international universities doing FSc or FA. Having put that aside, because they are certified, they're recognized, and all you need is an equivalence, and then you go. उस इक्विवेलेंस में चाहे आप ए लेवल्स की इक्विवेलेंस पाकिस्तान में करा रहे हैं या पाकिस्तान की FA/FSC की इक्विवेलेंस बाहर करा रहे हैं, यू विल ऑलवेज हैव और सफ़र अ सर्टन डेट्रीमेंट बिकॉज हर किसी का स्कोरिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, राइट? सो नाउ द किड्स हु वांट टू गो अब्रॉड आर नाउ लुकिंग, एंड for the past 2-3 decades have been looking at scholarships, right? Everybody would prefer, even the richest would prefer to save whatever they can save in terms of dollars and pounds. So you try to take a degree or a certificate to a university that they recognize without any equivalence ke issues in the middle. तो definitely deterring factor वो होता है. Okay, so miss, you're talking about FA, metric, A levels, IB वगैरह ना? I believe I am from like the very very lucky to study either from A levels or IB, ठीक है? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा demographics का chunk है which don't even have the basic education, right? I have a lot of interactions with individuals, और in fact कभी-कभी मैं अगर सिग्नल पर रुकता हूँ तो बच्चे से पूछता हूँ स्कूल क्यों नहीं जाते, तो 6th क्लास में आपने छोड़ दिया, right? एक वो demographic भी है, और वो एक बहुत massive extent पे जो कि हमें नज़र नहीं आता. उनके लिए class 10 भी एक privilege होती है, right? So for the families or for the demographics, for the culture which does not believe in education so much, right, and or which does not pursue education so much and withdraws their children at a very very young age. At a very very young age, right? How can we change that, and what do you think is the reason for that? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहले तो I will tell you or rather ask you, do you know the amount of the percentage of people who have access to private schools in Pakistan? No. It's only 3%. 10 years ago, it was 2%. In 10 years, we've increased only 1%, right? Now, these numbers are my research. I may be off by maybe a 0.5 or 1%. अगर आप किसी इंटरनेशनल या नेशनल रिसर्च करते हैं, बट जनरली दिस इज द नंबर. सो ये 3% out of the all the entire Pakistan, all सारे yes, this is we're talking about anyone who should be or is at the age of school going age. उन लोगों की access to private school education or education. Right. ठीक है, इसमें हम गवर्नमेंट स्कूल्स भी इंक्लूड कर रहे हैं. सो 3% is horrible. It is definitely something that is very very sad. Right. लेकिन अब मेरे ज़हन में एक सवाल है कि हमारे काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स आर आल्सो लिस्टेड एज पब्लिक स्कूल्स. तो does that flaw in that focus group or research count? For example, काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स हैं जब when I go to give their examinations उनके सेंटर पे -- पब्लिक स्कूल लिखा होता है, बट वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. अब so the survey that I'm talking about, the research that I'm talking about includes public and private schools, right? So yes, वो इस demographic में include होते हैं. However, that's very sad that happens. There is a lot more that I know about public schools and what's happening and what's not happening, and people who are trying to help them. Again, like we decided, we're not going to name people or name organizations because mashallah everyone's doing a great job, but yes, there are a lot of government schools out there that have let's go back, let's rewind. Okay, I'll come to this question again. Let's rewind and let's address what you said. How do we make it better? Okay, I will start from first. Let's all absorb this information. 3% of students get education. So yes, Hassaan, when you say you're privileged, you are. And when I tell any student who comes to me and I say, please make the most of this privilege, that is exactly what I mean. There are kids out there who are
absolutely amazingly brilliant but do not have access to education. ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर कि गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कर सकती थी या क्या करती या क्या नहीं करती. ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं माशाल्लाह. आपकी जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट थी, दे ट्राइड कमिंग अप विद SNC, right, which is the single national curriculum, and they, oh my god, that was messy. It was messy. They were trying to create a program for government schools which would apply to all private schools. I understand that they wanted to create a minimum standard of education, and if you wanted to go above and beyond that, you could, but it was not very well, that requirement legally was not very well defined as yet, because it was always, since the government came, it was just in the teething stages, and there were a lot of issues. They were calling up private schools and saying, please send your teacher to come and create a curriculum with us and to come and vet our curriculum. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताती हूँ मेरी जान. हाफ नो, 70%, no, 99% of the teachers that we have do not hold a degree in education. So you're asking housewives who have gone and become teachers in schools to come and vet a curriculum that you want the entire country to follow? That's flawed. That is flawed, deeply flawed. Okay? There was someone who came to me once, and I'm probably going to get into a lot of trouble saying all of this, who came to me once for a job interview. The position was a teacher. And mashallah, the lady had a B.Ed and an M.Ed. And I got very excited and I thought, wow, you know, like a teacher who studied education, I mean, meri to lottery lag gayi aaj. So I am excited and I'm like, do you want tea? Do you want coffee? Like, oh my God, this is so cool. And I said, so, you know, like, I'm really excited to learn. You're like the first person who's come for a job for a teaching position, and you've done your master's in education. And she goes, nahi ma'am, maine to M.Ed ki hai. I just felt like, what? And I thought maybe I heard wrong. And I said, yes, M.Ed, Masters in Education. मैंने कहा आपकी CV में लिखा है M.Ed and B.Ed, so Bachelor's in Education, Masters in Education. She goes, मैम आप गलत कह रही हैं, मैंने M.Ed और B.Ed की है, उसका कोई सवाल आप मुझसे पूछ लें. तो I mean, it's self-explanatory that I asked very nicely for her to have tea, and I said, yes, we'll get back to you, but I never got back to her. But that was my first, I'm telling you a story which was like a good decade ago, and that was my first exposure into the kind of teachers that we hire. The fact that if they have a degree in education from Pakistan, they don't even know that it's an education degree. And most of the time, 99% of the time, the people who come to us don't have a degree in education. जो साइंस टीचर्स होती हैं वो मोस्टली उन्हें बॉटनी की होती है, क्योंकि वो सबसे आसान होती है करनी, और वो बॉटनी करके आ जाते हैं और हम उनको साइंस टीचर्स रख लेते हैं. तो आप कह रहे हो कि पूरे पाकिस्तान का करिकुलम हम चेंज करेंगे और वो ये लोग चेंज करेंगे. ऐसा नहीं होता. आप गवर्नमेंट लेवल पे एक स्टेप ले रहे हो, आप एजुकेशनिस्ट को कॉल इन करो, आप हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को कॉल इन करो. And because they did not do that, they asked schools to, can you please send us a team for science? उनने क्या किया, उनने कहा जो, this is how we do things, and I never sent anyone, I was never asked to send anyone, but this is how heads do things. We see किसके टाइम टेबल में सबसे ज़्यादा टाइम है, okay आप चले जाएं. I mean, I'm not, कौन सबसे ज़्यादा वेला है, कौन सबसे ज़्यादा वेला बैठा है उस दिन जिस दिन उन लोगों ने मांगा है, and because we want to support the government, and you know we're going to support them the best way we can, find the most vela person and send them. That is the reality of education in our country. However, I will not say that it's very bleak. There are some schools who are doing really well, who are doing a very good job. But the sad part is, Hassaan, that they charge an arm and a leg. So no, education is not for everyone. Yes, there are kids out there who should be studying, not cleaning cars and creating random toys for other kids to play with. They should not be sitting at the mechanic filling air in someone's car. And genuinely, I will tell you, this is the reason why I came in education. And I will very humbly say, I have done nothing. I have tried.
I have tried learning different education systems. I've tried opening my own school, which was going to fund other schools, but the government works in such a beautiful way, mashallah, that I was not able to do it for a good 10 years. So, you know what I decided? I thought, I'm going to quit and I'm going to start again. And I will now try my best to create a system that will benefit not only the kids who can afford a very good education, but kids who deserve a very good education. And then what they do with that education is really up to them. But we have to give them a fighting chance, which they do not have yet. Right. So coming back, agar SNC की बात करें, I think that's another discussion in itself. I would just and say it's what you would call a spicy one. So yeah, it's a spicy one, but I believe हमारे अंदर coexistence होनी चाहिए. We should give permissions and open ways to other platforms to compete, और फिर उसके अंदर आप आके compete करें कि may the best one win. ठीक है, आप right? May I Sure. intercede? World's best education system, पता है किस country में है? Go. Finland. Mm-hmm. Finland does not have a competitive education system. Right. Finland has a collaborative education system. That is why it is so good. There is no top school in Finland. The entire country is top. You take anyone, any country, any education system, Finland is leading. Why? Because there is no competition. Everyone will get the same degree before they become a teacher. You're not allowed to become a teacher by doing botany and fashion designing and then ab math padha rahi hu grade 3 ko. Aisa nahi hota. I know I'm being really mean, but that's the reality. That is where we are flawed. We don't have the requirements for people to do the jobs. SNC, I believe in it. I wanted it to be. I was so happy when this whole thing came out. But the way it all untangled was actually heartbreaking. For someone who's so patriotic, you asked me in the beginning, why did you not go abroad? It's because I love my country. I want those 97% children who don't have access to education to have access to education. Right. And if not, just high-end education, literacy at the least. So talking about those 97, right? 97%. Coming back to the same question, right? I try to empathize and sympathize the most, right? अब मैं जब देखता हूँ कि a parent decided to pull their children out or put them into labor or some assistance in home operations, right? तो मैं उसके पीछे एक उनका mindset देखता हूँ. फिर मैं देखता हूँ कि यार अच्छा, for example, if I would go to that person and try to convince him कि नहीं, इसको metric या FSC करवाओ, जो कि उनकी range है, right? I'll be honest, but I don't have a lot of good establishments या good personalities to give examples of कि ये FSC या metric से यहाँ पहुँचे हैं. बहुत ज़्यादा होंगे, राइट? एक चंक होगा, लेकिन मेजरली जिस तरीके से एक बच्चा A लेवल करके कहीं ना कहीं पहुंच जाता है ना, FSC और मैट्रिक का मेरे हिसाब से वो डेमोग्राफिक नहीं है, राइट? नाउ दैट मे बी हैज़ टू डू विद द एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ, या जो लूप होल्स हैं, या अभी तक क्लास 9 की कंप्यूटर बुक के अंदर माउस के बारे में पढ़ाया जा रहा है. दैट्स अनदर कन्वर्सेशन, राइट? सो अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न दैट दे डिसाइड टू pull the students out? क्या हमारा belief नहीं है इतना education में, या it's just how we are? अच्छा देखो, ये इसका two pronged answer है. So first we're going to answer what is wrong and why are people pulling out their children. वो तो poverty है ना. देखो एक priorities होती हैं. There's a pyramid of what comes first in your priority list. First is survival. First is food. First is I need to be able to have, अगर किसी की मेरे घर में कोई बीमार हो गया तो access to basic medication like Panadol or Brufen or things like that. And unfortunately everything requires money because we're not a welfare state, right? हमारे पास medicine free नहीं है. तो those people who are pulling out their children are facing poverty like you and I cannot even imagine. So there are friends of mine who are running absolutely amazing foundations which are supporting shutter schools वो वाले हैं जो बिल्कुल एक छोटे से कमरे के अंदर होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइट बोर्ड होता है और एक शटर होता है, वो ऊपर खुल बंद होता है और वो स्कूल होता है. So they are supporting shutter schools, they are supporting government schools जहाँ पे teachers literally
पूरे महीना नहीं आते और सिर्फ एक दिन आते हैं और अपना नाम लिख के चले जाते हैं, वो वहाँ पे उन टीचर्स की जगह वेयर दे आर गेटिंग द सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट, दोज फाउंडेशंस आर पेइंग टीचर्स दैट दे हैव प्राइवेटली हायर्ड टू गो एंड टीच इन दोज गोस्ट टीचर्स प्लेसेस. ठीक है, गोस्ट स्कूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, गोस्ट टीचर्स पोजीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं हमारी कंट्री में, ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें. और बहुत अमेजिंग फाउंडेशंस बहुत लार्ज स्केल में पंजाब में, सिंध में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ से दे आर सपोर्टिंग दोज पीपल. दिस फाउंडेशन दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट also does, they go so they try so much that sometimes when a पेरेंट इज़ पुलिंग आउट देयर चाइल्ड फ्रॉम द शटर स्कूल, तो वो उनको कहते हैं आप इनको दिहाड़ी के लिए निकाल रहे हैं ना, तो अगर इसकी दिहाड़ी 500 है या इसकी दिहाड़ी 400 है तो हम आपको वो देते हैं, आप इसको स्कूल में ही रहने दें. ऐसे लोग भी हैं हमारे मुल्क के अंदर, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये सारा काम एट द एंड ऑफ द डे सिटीजन्स के ऊपर नहीं आता हसान, इसीलिए ये छोटे छोटे लेवल पर हो रहा है. ये आता है गवर्नमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट का काम है कि आप अपना फ्यूचर कैसे बेहतर करोगे बाय एजुकेटिंग दीज पीपल. हाउ आर यू गोइंग टू मेक द पॉपुलेशन, mass population, do better for the country, make better decisions, like something as simple as putting a vote. That's a decision that you have to take, and if you don't know the right from wrong, how are you going to make that decision? And then what happens in the country will happen. You're going to be influenced religiously. वो जो हैं वो फलाने वाले रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इसीलिए मैं उनको वोट दूंगा, या उनने हमारे 1960 में एक वेल बनाया था तो अब मैं उनको वोट दूंगा. ये अभी तक everything falls back on the fact that we are not educating our youth. And I'm sorry, I will always put it on the government at the end of the day. Even these private organizations that have built schools, and I know everyone. Only today I was reading a post of an ex-teacher who was going on and on and on about how these very big schools, they're private schools, they're minting money, they're doing this. No, darling, they're doing the job of the government. ठीक है, they're earning money, it's their right. It's every entrepreneur's right to earn money. It's not something that they're doing, they're not forcing you to put their children in that school. You don't want to put them, don't put them. But just because they've made a name for themselves doesn't mean that they're the bad guy. At the end of the day, the result for anything, for the future of the country, for the lack of education, will fall on the government. And we keep voting for the same people. Us educated people also keep voting for the same people. अब फोर्सिंग से मुझे ये याद आया, वी हैड अ लॉट ऑफ ड्रामा आई थिंक अ फ्यू इयर्स बिफोर, जो कि फीस वाले चीज़ के ऊपर एक मसला खुला था. बिल्कुल. एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स. एक तरफ आई वाज सिंपैथाइजिंग विद देम, बट ऑन द अदर हैंड आई वाज लाइक कि यार मैनेजमेंट फोर्स तो नहीं कर रही आपके बच्चे को स्कूल में रहने के लिए, राइट? एट देन देयर एंटरप्रेन्योर्स, और वो बिजनेस रन कर रहे हैं, वो प्रॉफिट आपसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. इनफैक्ट आई हैड एन आर्गूमेंट विद माई फैमिली एज वेल. मैंने कहा पापा जी वो इज़ अ CEO, उसका पर्पज़ ही है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना और मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना, और वो करेगा, वो चैरिटी नहीं चला रहा, राइट? सो आई थिंक वी एक्सपेक्ट रॉन्ग फ्रॉम द रॉन्ग प्लेसेस, राइट? ये जो एक्सपेक्टेशंस, अगर फीस लोअर होने की, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट स्कूल से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, व्हाई नॉट द सेम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, और फ्रॉम द पब्लिक स्कूल्स, राइट? Precisely. राइट. सो लेकिन अगेन उस तरफ से हम मायूस हुए हुए हैं, या इट्स नॉट टू आवर लेवल, या नॉट टू अंडरस्टैंड दैट, अगेन दैट्स अनदर डिबेट. So I do want to give my 2 cents on the whole fee fiasco that happened. I agree with you, Hassaan. I agree that at the end of the day, if someone is running, they are working very hard, those schools. The owners are working very hard. Their teams are working very hard. I have been in those teams. I know that being a head of a school, you do not work in certain hours. You're working all day long because there's something happening all day long. And they do care about the kids. They do empathize with them and they do sympathize with them. But you tell me this, Hassaan. These private schools have brought the education level at a par with international schools. Our kids are able to fight for scholarships in international universities. Are those kids coming from the government schools? No, they're not. How are these schools going to pay for the training of the teachers who will bring those students at par, if not by extracting whatever funds they can?
I can tell you, I've been a part of them. I've been a part of the trainings. They are constantly making the program better. They're making the teaching better. They're making the learning better. And I do not at all feel that this is the right path for any parent to take, saying that you should not charge money for this. तो अच्छा, गोइंग बैक टू सम ऑफ द पॉइंट्स यू मेंशन, राइट, एक तो आपने हमारा स्टैंडर्ड एज आईड से सिटीजन्स इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ मेंशन किया कि हाउ वी आर डिसाइडिंग ऑन वोट्स, हाउ वी आर डिसाइडिंग ऑन रियल लाइफ एक्शंस एंड एवरीथिंग. उसका व्हाट आई थिंक इज़ के क्यों है, मतलब अब हमारे पब्लिक सेक्टर इस तरह क्यों है, पब्लिक एजुकेशन इस तरह क्यों है, वाई आर द स्कूल्स एंड द सिस्टम सो आईड से incomplete in terms of international standards. उसका जो मेरे जहन में आंसर आता है, correct me if I'm wrong, what I think is कि अगर आपका MNA या आपका कोई political representative खड़ा हो रहा है who himself is not that well educated, right, वो क्यों चाहेगा कि उसका voter भी educated हो, right? Because मेरा ये मानना है कि अगर उसने पढ़ा लिखा दिया ना अपने वोटर को, तो उसका वोटर पर कल को पंखे रोड के ऊपर सिर्फ नहीं मानेगा. मेरा जैसा बंदा है, इफ़ आई एम एजुकेटेड, इफ़ समवन कम्स एंड आस्क्स मी फॉर अ वोट, आई विल गो टू SDG लेवल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेवल्स या UN लेवल, कि भाई तुम SDG 4 दो मुझे, SDG 6 दो, 7 दो, बात करते हैं. So number one, I will pat myself on the back for you knowing the SDGs. Touche to me. Actually, Hassaan, you've really... She is my teacher, by the way. Yes. For people who don't know, she was my teacher back then. और मैं मतलब she was, I think, one of the most influencing teachers, क्योंकि मैं जब शरारत करता था तो ये मेरा कान पकड़ती थी, बाकियों के हाथ में नहीं आता था. So that's why. I think that you cannot force learning on anyone. You have to bring it to them in a way that is acceptable to them. Everybody learns in a different way, and that is a conversation you and I have to have about the education system in Pakistan. अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सेस ही नहीं है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सेस जिनको है वो माशाल्लाह किस लेवल का है. So first talking about access to education, I believe that you are very right about जहाँ से आप शुरू हुए कि MNA और MPAs जो होते हैं, या उससे भी पीछे चले जाएं जो तहसीलदार होते हैं, जो आपके नाजिम्स होते हैं, ज़िला नाजिम होते हैं, वो उनको ये नहीं होता कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ तो कोई और एजुकेटेड ना हो. उनको ये होता है कि मैंने इनको एजुकेट कर दिया तो वही बात कि ये रोटी कपड़ा मकान से आगे चली जाएगी बात. देन दे विल बी आस्किंग अबाउट where is that road that will make it easier for me to reach the hospital on time, where is that infrastructure that will allow my children access to education and thus a better future than I am right now living. So those things, and then बात ये पीछे आ जाती है हसान डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर. They want कि ये मेरा वोट है, ये मेरा इलाका है, ये मेरी पक्की वोटर्स है, बस इनको मैं इतना दूँ कि ये मुझसे खुश रहें, इतना ना दूँ कि ये मुझे क्वेश्चन करना शुरू कर दें. राइट, दैट इज़ द पॉइंट. सो दे आर वांटिंग टू क्रिएट, अच्छा वो एक आध रोड बना देंगे मगर बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, अगली दफ़ा भी तो एक और बनानी है, फिर और सोचना पड़ेगा. एक आध कोई गवर्नमेंट स्कूल लगा देंगे मगर वो उसके ऊपर दे विल नॉट बी लुकिंग एट वेदर और नॉट दोज पीपल आर कमिंग टू स्कूल, वेदर और नॉट द टीचर्स आर ट्रेन्ड इनफ, वेदर और नॉट द टीचर्स आर बीइंग हायर्ड जस्ट बिकॉज दे नो समवन. जो हमारे यहाँ पे होता है ना, सिफारिश लग गई, हेड मिस्ट्रेस भी सिफारिश पे लगी हुई है, टीचर भी सिफारिश पे लगी हुई है, पीछे से उन्होंने क्या किया है या वो आगे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली. राइट, सो इट डज stem from the fact that people who are used to being politicians and are used to having hamari seat want to keep it. So would you send your children to public schools or government schools? I would rather homeschool them. Why? Because so let's start with the fact that a lot of the government schools, not in major cities, but जब आप थोड़ा सबर्बिया में चले जाते हैं, there are a lot of ghost schools. बिल्डिंग बन जाती है, नाम लग जाता है, लोगों के सैलरी जा रही होती है मंथली, मगर स्कूल में कोई नहीं आ रहा होता. एक तो ये होता है. उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल का करिकुलम इतना आउटडेटेड है कि आप छोड़ दो कि वो रोट लर्निंग कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ आज के ज़माने की रोट लर्निंग कर लें तो फिर भी थोड़ा सा कुछ बेहतर हो जाएगा. ठीक है, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. नहीं, फंडिंग का तो इशू नहीं है. कराची में, सिंध में, बलोचिस्तान में, पंजाब में इतने स्कूल्स हैं जो कि सिर्फ ऑन पेपर हैं. और उनकी फंडिंग जाती है, फीस कटती है, लेकिन स्कूल्स आपको नज़र नहीं आएंगे. It's the mentality of the people who are
the leaders in that area, that is the issue. वो स्कूल बना देंगे मगर स्कूल चल नहीं रहा होगा, उसके अंदर कोई बैठा नहीं होगा, मगर जो पेपर पे होंगे उनको पेज आ रही होगी घर पे, जिसको गोस्ट स्कूल कहते हैं, गोस्ट टीचर कहते हैं, ये सारा कुछ हो रहा होगा. Now coming to why I would not send my children is because, you know, we talked about the difference in IB and A levels. I don't want my children to be followers, mere followers, rote learn किया यहाँ से और वहाँ लगा दिया. I want them to look at something and critically analyze it. And if that means that I'd rather homeschool them and teach them critical analysis on my own, then why not? I would much rather do that. The thing about government schools is that we are still focused on discipline the child, discipline the child, discipline the child. If they're not getting grades, further discipline the child. We don't even know about something as big. When you go abroad, so we spoke about the difference between trainings abroad and trainings in Pakistan. जब आप बाहर जाते हैं, आप लोगों से expose होते हैं, so you learn things, right? Everybody abroad knows about Howard Gardner. And right now, if I ask you to put a poll on this post of yours and ask educationists in Pakistan who Howard Gardner is, and honestly, without Googling, fill out a form that says Howard Gardner is XYZ, they will not know who he is. He is the person who coined the term multiple intelligence. Multiple intelligence का ये मतलब होता है कि there are different ways of how a human being can be intelligent. It can be that someone is an auditory learner. It can be that someone is a visual learner. It can be that someone is a kinesthetic learner. Everybody learns in a different way. And each classroom, each lesson that is taking place should address the learning styles of different people. Now, there are a lot of people who agree with this theory and a lot of people who disagree with this theory. मैंने आपको एक example दी है. अब ये multiple intelligence theory हमारे किसी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे तो किसी को पता ही नहीं है. शायद एक आध कोई बंदा हो जो इन लोगों ने मिनिस्ट्री में रखा हो, जिसने कोई एक आध डिग्री बाहर से की हो, जिसने कभी इसके बारे में थियोरी पढ़ी हो, मगर जो हर एजुकेशनिस्ट, हर टीचर जो एक क्लास के अंदर जाती है, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी क्लास में शायद 4 बच्चे विजुअल लर्नर्स हैं, मेरी क्लास में शायद कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ लिसनिंग के लिए भी तैयार करना है, मुझे उनके कुछ विजुअल्स भी तैयार करने हैं, और काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए मुझे कुछ डूइंग भी तैयार करनी है. सम पीपल लर्न बाय डूइंग इट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ काइनेस्थेटिक लर्नर. यू कैन मेक मी लर्न समथिंग ज़बानी, जिसको ओरल लर्नर कहते हैं. मैं ज़बानी याद कर लूँगी, पर एक टाइम पे मुझे वो भूल जाएगा, वो मेरे लिए पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं होएगी. एंड देन व्हेन आई गो एंड सिट फॉर द एग्जाम, दे विल बी लाइक, यार ये तो शी कांट डू इट. However, if you would have made me practice that practically, it would be set in stone in my brain and I would do well. So it's not that my brain does not absorb the concept or that I don't have the ability. अभी मैं किसी के orientation में गई हुई थी, Hassaan, top school, and the person kept going on and on about, and then we will talk about the child's ability, and then and I was thinking that she does not know that she's not supposed to use the word ability right now. She's supposed to use progress. We are going to talk about the child's progress, not ability. They're two completely different things. हमारे तो schools में ये नहीं पता लोगों को. तो obviously, I will really be at a loss if I am ever forced to send my kids to public school. So, what is the adequate, efficient education system for you? Like, for example, अगर आपको chance दे दें कि design an education system for your children, what would be the tops? I don't know, like 5 or 6 things. I think it's very, very important what the Japanese do. They don't start education with literacy. They start education with mannerism, with basic life skills. So उन लोगों के जो बिल्कुल हमारे जो यहाँ पे early years कहते हैं, उनके अर्ली ईयर्स के बच्चे इमीडिएटली स्कूल जाके लिटरेसी नहीं सीखते. वो सीखते हैं कि मैंने किसी को थैंक यू कैसे करना है अगर किसी ने मुझे कोई चीज़ दी है. अगर मैंने अपनी सीट खींची है और मैं उसमें बैठी हूँ और जब मैं उठी हूँ तो मैंने उसको वापस कैसे रखना है. अगर मैं क्लासरूम को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसको मैंने क्लीन कैसे रखना है. वो लोग बेसिक मैनरिज्म और लाइफ स्किल्स सिखाते हैं. आप हमारे ग्रेड 10 के बच्चों को ले लो, उनको अपना जूस का डब्बा डस्टबिन में भी नहीं डालना आता. That's where I would start. I would start with really good life skills. Then I would work my way up, and I think I would do a mixture of what is called
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कि जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है वो बच्चा सवाल करता है और वो जो है फिर इवेंचुअली अपनी इंक्वायरी लीड करता है इन whatever एरिया दे आर लुकिंग एट. Obviously it's guided by the teacher, there's a lot of disciplines that are involved in it, but it is the child's inquiry that is leading everything, the child's curiosity. Why I would do that? There's someone called Sir Ken Robinson. Every human being should know that guy. He was knighted for his work in education. And there is a very famous TED talk of his that says schools are now killing creativity. Or something like that. Something to with getting rid of creativity. And oh my god, that guy is my hero. The first time I saw that, and then, you know, of course after that I started, you know, reading. And how does he explain that happens? Like, why do you say that in a very short manner? He does it very beautifully. I don't think I can do justice to the way he explains it. But he says, according to him, it's when you make kids sit in a certain box and you tell them, now is your time to get up. Now is your time to sit down. Now is your time to start writing. Now is your time to start talking. And you cannot exchange these timings, which means that you're taking away the initial power and the initial say that they have in their life. So what you're doing is you're putting them in a box and you're saying, if you don't fit in the box, you don't belong here. जो हम स्कूल्स में करते हैं, बेल बजी और आपने अब बाहर जाना है. इससे पहले गेम्स नहीं हो सकती, इसके बाद नहीं गेम्स हो सकती. आई डोंट केयर व्हाट यू थिंकिंग. वी आर टेकिंग अवे डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम देम, राइट? व्हेन यू डोंट डिसाइड फॉर योरसेल्फ, you are not thinking about anything, which means your thinking skills are getting lessened. So basically, when you are putting kids in boxes and you're saying, do not decide for yourself, you're taking away decision making power. और जब किसी को कुछ डिसाइड नहीं करना होता हसान, उसका ब्रेन जो है वो बिल्कुल बैक बर्नर पे चला जाता है. इट्स लाइक व्हेन यू आर वाचिंग टीवी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो एट दैट टाइम योर ब्रेन एक्टिविटी इज एट द मिनिमम. व्हेन यू आर स्लीपिंग, हाउएवर, इट्स वेरी एक्टिव बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज अप एंड इट्स डूइंग व्हाट इट नीड्स टू डू. हम बच्चों के साथ ये करते हैं, हम उनको कहते हैं इतने बजे आप खा सकते हैं, इतने बजे आप सांस ले सकते हैं, इतने बजे आप ये कर सकते हैं. यू आर स्लोली टेकिंग अवे एवरी डिसीजन मेकिंग पावर दैट दे हैव. देन यू आर टेलिंग देम, if you are doing well in these subjects, you are intelligent. If you're doing well in these subjects, what are you going to do? For example, art subjects. So you are telling them creativity is bad for you. You're manufacturing them like a factory. Every class is a batch. Like Colgate का बैच होता है, जिस तरह Hershey's का बैच होता है. लेकिन you know, a common man's argument on that would be कि बच्चा बहुत immature या young नहीं है for him to decide himself, या फिर they have this fear कि बच्चा गलत जगह ना चला जाए या misjudge ना कर ले, because at the end, like, if there's a child, उसका passion, उसका the ability to test different things is like till 18 or something, right? उससे पहले सारी energy उसकी होती है कि मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, arts try करना है. And if we don't let them explore that curiosity, then we're killing it. So what you're saying is, we're not giving them choices in classes like आज मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा या मैं प्लेन चलाऊंगा. It's not that dangerous. It's, today I feel like doing artwork only. You let the child explore the artwork. You ask them, so what are you drawing? So the beauty about inquiry education, first let me give you that background so that it makes a little more sense to you, is that it's holistic. If a child is inquiring into something like, I am going to draw a painting of the most beautiful place, आप उसके अंदर जियोग्राफी डाल सकते हैं, आप उसके अंदर साइंस डाल सकते हैं. व्हाट इज़ द वेदर लाइक? बच्चों को तो हम यही सिखाते हैं ना, सीजन्स होते हैं, सीजन्स में विंटर में बर्फ़ होती है और स्प्रिंग में फ्लावर्स होते हैं. सो that child will lead their inquiry and the teacher will provide information and allow them to research. The child will be like, let me think, what season am I drawing? And then the teacher will be like, that's up to you, you can decide. So when you give them too many instructions, you're taking away their decision making power. और हम लोग तो यही करते हैं. हमारा तो बच्चों का आर्ट प्रोजेक्ट भी होता है. In your art project, it should not be more than 20 inches by 10 inches. It should not have this, it should not have this, it should not have this. You're taking away the creativity. Right. अब देखें, अब parents के अंदर, of course, what do I know about parenting? You're a parent yourself. But in normal environment में, what I think when I try to empathize is कि माँ बाप को डर होता है कि यार इस कौम में तो इंजीनियर भी रोल रहे हैं, तो इसने आर्टिस्ट बन के क्या कर लेना है, राइट? हमारे
इन्वायरमेंट या सराउंडिंग्स के अंदर एज सच एग्जांपल्स नहीं हैं जिसको देख के आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं. अगर है भी तो मेरे ख्याल से 0.0001% है. सो आई थिंक दैट द पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दे आर रादर डिफेंसिव, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल let's talk about being an artist, right? If I go and pitch my parents I want to be an artist, they'll be like that's absurd. ठीक है, ये कौन सी डेमोग्राफिक तुम बात करो. अब उनका एक तरीके से आज से they're right but also wrong. But if I focus on the right part, it's because कि यार अच्छा तुमने आर्टिस्ट बनना क्या करना, फॉर एग्जांपल एक्टर बनना, अच्छा सिंगर बनना. हमारी इंडस्ट्री है कितनी बड़ी, अभी ग्रो कर रही है, लास्ट 5 साल में ग्रो की है, राइट. अगर कोई बच्चा कहता है मैंने पेंटर बनना है, किधर है इंडस्ट्री पाकिस्तान में? इट्स है लेकिन इट्स अ वेरी नीश एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अब्रॉड. सो व्हेन आई लुक एट दैट आई फील लाइक कि यार अच्छा अगर पेरेंट जिस नज़र से देखता है वो ये देखता है कि इसका सक्सेस रेट क्या है, मेरे आसपास कितनी एग्जांपल्स हैं, पर जब वो आसपास देखता है उसको डॉक्टर नज़र आता है, इंजीनियर नज़र आता है, आर्मी नज़र आती है, या फिर सीए नज़र आता है. I completely agree with you. That is predominantly how people in Pakistan think. However, if we're talking about breaking norms, then why will we not break the norms? Why will we not teach people that it's okay if someone wants to be an artist? And that we have Gulji, who is an artist. We have Changez Sultan, who's an artist. We have a lot of people who are artists. So I agree. मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग जो आर्ट में जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. मैं कह रही हूँ कि होते हैं. Even for Olympics, even for any niche sport, मसलन आप कैरम ले लें, आप स्नूकर ले लें, आप कोई भी गेम ले लें, right? For anything, not only being an artist. So the difference is, Hassaan, what you're saying is my question to you now, is it more important for that parent that their child is happy doing what they're doing, and eventually statistics show that if you're happy doing what you're doing, you become successful in it? Or is it more important that they follow something that they necessarily may not want to do, but it's acceptable and leads to success, and thus they should do it? Which is the decision that the parents need to take, right? And I know कि हमारे मुल्क में कैसा होता है. I live in this community कि it's not okay for kids to make decisions like that without their parents' consent कि मैं ये करना चाहता हूँ या मैं वो करना चाहता हूँ. And I know, being in education for so long, that there are a lot of kids who come to me and they're like, Miss Arham, I want to be an artist, and the parent is like, what? No, you're taking triple science, baby. There you go. You know, I know that happens. But then that is the point of educating everyone about the fact that it's okay to be an artist. Why is it not okay to be an artist? It's okay. If the person is happy doing what they're doing, that is more important. So our priorities as human beings need to change also. I believe that an important factor, for example, if a child goes to his father for doing something, let's name it X, right? अब वो normal नहीं है, ना वो doctor है, ना वो engineer है, कुछ भी नहीं है. फर्ज करें artist है, singer है, या playback guitarist है, anything. Okay. अब वो बच्चे basically I think he is rebellious. ठीक है, वो कह रहा है कि ये नॉर्मल सिस्टम है, ये नॉर्मल ट्रेन है, बाबा मैंने इसमें नहीं जाना. शेक्सपियर के एक प्ले में है कि वी आर नॉट लाइक द यूथ नाउ, वी वर बेटर. शेक्सपियर. एवरीवन थिंक्स कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं. रिबेलियन पहले दिन से है, आपकी यूथ रिबेल करेगी. दैट इज़ इनग्रेन एंड दैट इज़ व्हाट लीड्स प्रोग्रेस. अगर किसी ने रिबेल ना किया होता तो आज पाकिस्तान ना होता. अगर किसी ने ये ना सोचा होता कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ तो अमेरिका भी एग्जिस्ट ना करता. यू नो, people have rebelled and that has led to progress. So for me, I'd say rebellion is not always a bad thing. I'm not saying it's always a good thing, but I'm saying it's not so black and white. There are grays in it. Rebellion can be a good thing. There can be people who rebelled and became artists, and because of them now we're getting to see things or experience art in a way that we hadn't before. Like Picasso. You know, he changed how people used to paint after the genre that he brought, you know, the abstract that he does, the expressions that he brought. So rebellion can be a good thing. It can lead to progress. But I empathize with parents who are only looking out for their child. They want कि मेरा बच्चा successful हो, उसके घर में खाना हो, उसके बच्चों के लिए educate करने के लिए बच्चों के लिए पैसे हो. I understand that. अच्छा, so again talking about all education and stuff, there's a
very specific trend that has appeared in my generation or the generation before, which is go to college or not go to college, or go to university or don't go to university. In fact, आपका स्टूडेंट है और मेरे क्लासमेट्स हैं, वी ऑल्सो हैव डिस्कशंस एंड ही इज़ लाइक यार नहीं यूनिवर्सिटी नहीं जाना, अब यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है. और मैं कहता हूँ मेरे भाई हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, स्लो स्पीड पे रहें. पहले आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को अडॉप्ट करने दें, फिर सेकंड को, फिर हमारी बारी आएगी, और वो आपके बच्चों की भी नहीं, आपके बच्चों के बच्चों की आएगी, तो आप यूनिवर्सिटी जाएँ. बट लेकिन अगेन उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसकी डिबेट्स हैं. कुछ कहते हैं रट्टा सिस्टम है मत जाओ, कुछ कहते हैं टाइम्स आया है मत जाओ, एंड अदर एंड स्पेशली आई फेल दिस कि एंटरप्रेन्योरशिप और रिबेलियसनेस की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर बहुत है, राइट. सो इसमें दो सिनेरियोज हैं. एक है लोकल यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान, राइट, विच इज़ चीप, ठीक है. फिर एक है इंटरनेशनल, परस्यूइंग इंटरनेशनल, जहाँ पे फिर बात डॉलर की आ जाती है, ठीक है. बहुत different plans and different expectations हैं, and it's two different topics. आप इसको outcomes भी exactly, तो आप इसको इस तरह आंसर करें कि in terms of local universities क्या जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, and in the other case जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. अच्छा, so let's start with everyone's gonna think he's my favorite Jay-Z. Okay, the dude has made it. By any ratio of success, he has made it. However, he started making it after his education was complete. एंड वो बार बार अपने हर इंटरव्यू में यही बात करता है. अब देखो, जब आप एक एज पे आ जाते हो ना, तो एक सर्टन एक्सपीरियंस से एक सर्टन विजडम आप डेवलप कर लेते हो. एंड आई एम ऑल फॉर द रिबेलियन एंड द एनर्जी एंड द need for entrepreneurship in this country that our youth is trying to fill in. I genuinely do. And in all honesty, the fact that my entire family are in entrepreneurship, and that my father himself was a very successful one, kind of gives it in my blood also. मगर मैं ये आपको ज़रूर कहूँगी कि when you have experienced life as much as we have, you realize that every shot that you call does not have to end in success. ठीक है. फिर मैं साहब ने मुझे इतना तंग क्यों किया था 2 साल. मैं यही तो कह रही हूँ, मैं यही कर रहा था. नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि पहले अपनी डिग्रीज करके और अपने एक बहुत सिक्योर सा अपना बैक क्रिएट कर लो. कभी भी अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर ह्यूमन बींग्स के ओ दे विल सपोर्ट मी इफ देर इज अ रेनी डे फॉर मी. यू शुड ऑलवेज नो worst comes to worst, my degree is going to come in handy and I'm going to do something with it. If you don't get a position in the if the economy is bad and whatever profession you have your degree in, अगर वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, आप टीचिंग कर सकते हो, आप ऑनलाइन सब्सटीट्यूशंस, मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन डू विद अ डिग्री. बट आई जेन्युइनली फील कि सबसे पहले तो ये हम, मेरी तरफ से ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एंड आई कैन accept that other people disagree with it. That is the whole point of education, that you come to such a maturity that you realize that everyone has a different opinion, right? So my opinion is, have that degree as your backup and then go ahead, make as many shots as you want, fail as many times as it needs to succeed. ठीक है. ये नहीं होता कि एक दफ़ा मैंने कर लिया और मैं उसी में सक्सेस हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता. कभी कभी हो भी जाता है, वैसे ऑनेस्टली हो भी जाता है, मगर यू नीड टू ट्राई अ कपल ऑफ थिंग्स बिफोर यू रियली हिट द जैकपॉट, राइट. बट योर डिग्री शुड बी योर बैकअप. सो लोकल, sorry, I just want to answer your question. Local or international फिलहाल is not the criteria. The criteria is you should have a degree. ठीक है. चाहे हमें जो हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छी लगती है, बुरी लगती है, अगर आप पाकिस्तान में कोई डिग्री ले सकते हैं लें, अगर आप बाहर कोई डिग्री ले सकते हैं वो लें. अ लॉट ऑफ, एंड आई विल से दिस, इंटेलिजेंट पीपल who are unable to go for their bachelors because of the dime, because of the dollar, and mashallah, thanks to not the government, thanks to all the politicians, the economy ka haal in our country, if you can't afford it for your bachelors, go for your masters. मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी बेहतर मिलती हैं, मास्टर्स के लिए स्कोप भी बेहतर होता है, मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए वो आपको फंड भी करते हैं. ठीक है. गो फॉर दैट, बट पुट योर डिग्री बिहाइंड यू, because life can change in any way. I have seen people get married in the most well-off entrepreneurial families, and the passing away of one person who was running that entire system has brought people on their knees.
उस वक्त क्या होता है हसान, उस वक्त अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो वो अपने आप को बचा सकते हैं. देयर इज़ दिस वन पर्सन दैट आई न्यू, उन लोगों की फैमिली में उन लोगों के कुछ बच्चे जो थे वो एजुकेटेड थे और कुछ एजुकेटेड एज एन डॉक्टर्स एंड ऑल, एंड कुछ जो थे वो दे वर डूइंग बिजनेस विद द फादर एंड दे वर डूइंग रियली वेल. एंड जैसे होता है ज़िंदगी में, फादर पास्ड अवे, द बिजनेस केम क्रम्बलिंग डाउन बिकॉज बाकी सब सपोर्ट रोल प्ले कर रहे थे. जो मेन रोल था वो एक पर्सन प्ले कर रहा था जो अब नहीं है, राइट. दोज children in that family who were educated continued living a respectable life, and those children who were basing everything on their father's money or the father's tact and skill were then not doing so well. अब इसमें मेरा टेक ये है कि आई थिंक द गेम इज़ अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, राइट. आई थिंक सम पीपल कैन कंट्रोल देमसेल्व्स इफ दे आर आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज़. अगर उनका आर्सनल, उनका सेल्फ डिसिप्लिन एक लेवल पे है जिस पे वो अपने आप को responsible enough समझ सके, right? So then I think, okay, those type of personalities who are self conscious and sufficient, और उनका एक vision है, उनका एक dream है, maybe they can afford to take the risk. मेरे हिसाब से ये जो question है which is about should you go to university or not, or should you do entrepreneurship or something, be a rebel or something, I think it has to do, and it depends on the personality you are. ठीक है? But you have to realize, Hassaan, that success is not only defined by that person who is pursuing that success. The economy of where you're pursuing it matters. अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया और आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है और आपके ऑर्डर के बीच में आपकी कंट्री एकदम से बैंकरप्ट होगी और डॉलर रेट यहाँ से यहाँ चला गया, जो हमारे मुल्क में होता है, तो उस बंदे की डिसिप्लिन पे तो बात ना आई, उसकी एनवायरनमेंट और ये उसके कंट्री की इकोनॉमी पे बात आ गई. सो कहीं से भी ज़िंदगी आपको धचका दे सकती है. एक डिग्री पीछे होना इज़ जस्ट अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट. इट इज़, डोंट परस्यू इट, बट हैव अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट एज someone who's a mom and someone who's been in education and someone who's experienced life. I will say this, but then again, like I said, it's my perspective, you know. So you're saying कि बैकअप प्लान होना चाहिए, right? Definitely. अब मसला ये है कि जिनका बैकअप नहीं प्राइमरी प्लान है यूनिवर्सिटी का, what I hear from employers is that कि बैचलर डिग्रीज भी दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, जो करके आ रहे हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है, जॉब लेने के लायक नहीं है. वेयर डू वी गो देन? अगर बैकअप भी नहीं, प्राइमरी बना लिए चलें, हमने लोकली बैचलर्स अचीव कर लिया, फिर भी एम्प्लॉयर कंप्लेन करता है कि यार इसकी बैचलर्स है लेकिन इसको काम करने का तरीका नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर इशू की दिलाई करता है. देखो फिर उसमें ये होता है, उसमें देन अ पर्सन हैज़ टू डेवलप देयर स्किल्स, एंड ये तो फिर देखो ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मगर मेनली ये डिपेंड करता है कि आपके एजुकेशन सिस्टम आपके अंदर वो कितनी स्किल्स डेवलप कर सकता है कि नहीं करता. आई नो इट फील्स लाइक आई एम सेलिंग द IB, बट द स्किल डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द IB इफ़ इट इज़ डन राइट. मेरे ख्याल से अगर आपके अंदर पैशन या ड्राइव है, सो आई थिंक अ लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन इज़ इनफ. You don't agree to that? For what? For pursuing education. It can be. I'm not going to disagree with that. There are a Because- lot of kids who are homeschooled. That is the definition of homeschool, right? कि आप किसी regimented building के अंदर नहीं जा रहे जहाँ पे आपको कोई चीज़ मिल रही है. आप एक certain curriculum इंटरनेट से देख रहे हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आप रजिस्टर कर रहे हैं और आप उसमें एग्जाम्स दे रहे हैं. Touche. You Right. can do that. More power to you. For the 95% जो कि प्राइवेट स्कूल्स नहीं जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स जा रहे हैं, राइट, या चलो उसको मैं कहता हूँ बेस्ट केस सिनेरियो में 95 से भी नीचे रिड्यूस कर लें, राइट. लेट्स गो इनटू अ फेरी लैंड एंड इमेजिन कि जो सिर्फ 60% है विच गो टू सो बैड पब्लिक स्कूल्स, राइट. अब उनके पास हमारी तरह एक्सेस नहीं है, right? They don't have public libraries, they don't have facilities, they don't have student programs. वो एक क्लास में जाते हैं उसकी दुआ ही होती है पंखा चल रहा हो, तो अक्सर पंखा भी नहीं होता. हाँ, अक्सर पंखा भी नहीं होता, right? So where do they go? What should they do? What's your advice to them? My advice to them is that pursue education. अगर आपको चीन भी जाना पड़े, मेहनत करो एजुकेशन के लिए. अगर आपको वो शहर छोड़ के कहीं बाहर आना पड़ जाए तो वो भी कर लो. मगर उन लोगों से ज़्यादा, हसान, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एडवाइस दें जो लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उनको. जो एम्पावर्ड नहीं है उसको मैं एडवाइस तो यही दूंगी कि ट्राई योर बेस्ट टू परस्यू. मगर जो एम्पावर्ड है, एडवाइस उसको जानी चाहिए कि आप लोगों को इक्विप करें विद द बेसिक लिटरेसी दैट दे रिक्वायर. राइट. अब एक स्टूडेंट है, राइट. अब here's where I get disheartened, right? एक इंडिविजुअल है वो बेचारा जिस
तरफ कोशिश करता है, जिस डिपार्टमेंट में कोशिश करते हैं, कुछ बन के भी आता है ना, तो हम एज ए कल्चर हम लोग उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं, या उसको हम डिसोन कर देते हैं, या हम उसको एक डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जांपल, बच्चे का एक्सेंट अच्छा है, बच्चा इंग्लिश स्कूल गया, बर्गर बन गया. ठीक है, बच्चे ने I'm kind of labeled a burger, so I empathize with you. अब बच्चे ने पेंडू एक्सेंट में बात की है, वो जाहिल बन गया. राइट. Well, सो not मुझे ये necessarily बात जाहिल, नहीं, एक बात करो, but- मुझे बात इस तरीके से याद है, आपने कहा चीन चले जाओ, मैंने कहा अच्छा मैं चीन चला गया हूँ, फिर वापस आऊँगा सारे चीनी कहेंगे, फिर मैं क्या करूँगा. तो You're saying that to me? नहीं नहीं मैं अपनी बात करूँ. सो फॉर एग्जांपल, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं टर्की चला गया, वापस आया हूँ. सो नाउ मुझे अपने दोस्तों ने बर्गर बोलना शुरू कर दी. तो अब मैं एजुकेशन परस्यू करूँ तो प्रॉब्लम है, बाहर का कल्चर अडॉप्ट करूँ तो So प्रॉब्लम है. why does anyone need to be so sensitive that someone calling them anything will affect their life? It doesn't. ये तो कॉल नहीं करना चाहिए ना मेरे You हिसाब should. से. Agreed. But हम इंसान लेबल्स को- लगा देते हैं, but ये you- बर्गर है, ये अनपढ़ है, ये पिंडी बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, ये FSC है, IB है, ये अच्छा, लेवल है. अच्छा, we'll step back a little. Name labeling number one comes from people's own insecurities. ठीक है, जब आप खुद इनसिक्योर होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप अपनी इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए दूसरी की इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जब आपको ये समझ आ जाए ना कि ये मुझे इसीलिए ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी कॉल्स मी बर्गर एंड दैट्स ओके. इफ आई एम well spoken and that means that I'm going to be called a burger, I'm okay with that. I'm a burger. Actually, I'm the really nice double decker Big Mac burger. So what? Because I know that this is happening because they themselves have something that needs to be covered, I will then just feel sorry for them. I'm not going to feel threatened by it. I'm going to own it and wear it with very beautiful colors, which I do. ठीक है. तो मिस बर्गर नहीं, मजाक करो. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट. Right back at you, burger. ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, आई एम हैप्पी टू बी अ बर्गर, लेकिन डबल पैटी वाला. That's more fun. यू हैव चिल्ड्रन, ठीक है, Alhamdulillah. एंड ऑफ कोर्स मुझे ख्याल है आपने मुझे बात बताई थी कि जो भी नस्ल आती है ना, वो अगली नस्ल को कहती है बेटा हमारे ज़माने में तो ये नहीं तो था. होता है ना, ये या तो मैं तुम कह रही लोग तो शेक्सपियर ने बोला ये था. तुम तो इस तरह, मतलब तुम लोग के कल्चर्स या नॉर्म्स तो इस तरह. सो व्हेन यू लुक एट योर किड्स और व्हेन यू लुक एट योर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, आपको क्या शिफ्ट नज़र आ रहा है उनकी एनर्जीज़ में, उनकी पर्सनालिटीज़ में, या उनके माइंडसेट्स में, कि रिबेलियसनेस ज़्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस ज़्यादा है, उनका पॉलिटिक्स में और इंटेंट है, कम है, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटीज़ में क्या डिफरेंस नज़र आता है कि ये जनरेशन अब आगे आ रही है? एक तो इधर एक बहुत अफसोस ये है कि मेरा एक्सपोजर इज़ ओनली विद द वेरी हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स, which is a sad thing for me, right? So my perspective will come from a very small demographic. The difference that I see in the kids that I was teaching 10 years ago or when I was going to school and the kids now is, one, you already mentioned, अब तो छोटू बच्चा भी जो होता है ना, जो अभी प्राइमरी ईयर से बेचारा सेकेंडरी ईयर में आ रहा होता है, वो भी यही कह रहा होता है जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है. विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग बिकॉज यू नो इकोनॉमीज इसी तरह बढ़ती हैं. अगर हर कोई ये जॉब करना शुरू कर जाएगा तो फिर जॉब क्रिएट कौन करेगा, राइट? और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं ये प्राइवेट स्कूल्स के बारे में भी कहती हूँ. हर कोई कहता है प्राइवेट स्कूल पैसे ले रहे हैं, भाई वो कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं आप सोच रहे हैं? आप एज एन इंडिविजुअल अपने मुल्क के लिए कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं? लाखों लोगों को इन लोगों ने एम्प्लॉय किया हुआ है. लाखों लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनकी वजह से, बिकॉज टीचर्स गेट अ सर्टन परसेंटेज ऑफ एंड दैट इज़ हाउ दे आर एबल टू अफोर्ड गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. व्हाई आर यू टेकिंग अवे just the negative parts? And that is something very sad about human beings. मैं ये नहीं कहूँगी हमारी कम्युनिटी, हम पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, मगर ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि इंसान नेगेटिव पार्ट को लेके बहुत मैग्नीफाई कर देता है उसको. यार ये स्कूल्स बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं. सो yes, I am all for this new rebellion that the kids have against 9 to 5 jobs. I love it. I love the fact that they want to do something on their own, but I will always say to them that life is unpredictable. Always have a plan B. Always. अल्लाह करे कि पहले गो में बच्चा अपनी कोई बिजनेस खोले, कोई प्रोजेक्ट करे और वो इतना अमेजिंग हो कि वो मेरा नाम रोशन करे क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इवन इफ दे आर नॉट माई स्टूडेंट्स. बट इफ push comes to shove, you have something that will not make you go down on your knees in front of anyone,
because that's not what you want for your children. You want your children to be safe. So when you keep asking me between university and not university, I will always say university, because that means that is the difference between my child going down on their knees in front of someone and not going down on their knees. My child having that ability to save face when they need to. Right. So wrapping this up, 3 or 2 things you wish you could change about my generation now, and what would you change? Except PUBG. नहीं, उनके lifestyle में. So something I want to tell the children is, number one, we have forgotten our mannerism. हम लोग तहजीब अपनी भूल गए हैं. बड़ों को प्यार से सलाम करना, बड़ों की इज़्ज़त करना. आप कितना भी पढ़ लिख जाओगे ना, आपकी तहजीब will define a lot of things in your life, which we don't see at this age. Second thing, we want shortcuts for everything now. All kids want shortcuts to success. They want shortcuts to publicity. They want shortcuts to fame. जो चीज़ जितनी जल्दी आती है, please remember, वो उतनी ही जल्दी जाती है. ये physics का law है. The faster something will go up, the faster it will go down. Am I right? I shouldn't ask you physics questions. मैं बहुत बुरा हूँ. मैं बहुत. And the third thing that I want kids to always remember is your identity is very important in life. It is not important अगर मैं और हसान अभी हंस रहे हैं और एक दूसरे को बर्गर कह रहे हैं and we're comfortable with it, it's because we both know how desi we are inside. We are super desi and super patriotic, and I know this about this. ढाबे पे बैठे होते हैं. So अपनी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. येस, स्किल डेवलप करना, लैंग्वेज डेवलप करना, फ्लुएंसी, जो भी लैंग्वेज आप परस्यू कर रहे हैं उसमें डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर अपनी आइडेंटिटी को रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड से I would encourage, which I feel that are lacking just a little bit in the upcoming generation. Miss, thank you so much for coming for the Miss, thank you so much for coming on the podcast. And क्योंकि मैं देसी हूँ, ते अपना ख्याल रखो. भूख बड़ी लगी है, मैं उधर जाके रोटी खानी है. Miss, thank you so much, and inshallah see you again.